We're getting in some details coming in right now. This has got to do with the Umesh Pal murder case probe. Bulldozer justice for murderer Atiq said. Bulldozer to raise the property of Atiq said is what we are learning. Illegal construction of Atiq said to be raised after Yogi said mafia ko mitti mein mila denge. Bulldozers roll on streets of Prayagraj. Bulldozers there on the streets of Prayagraj. This comes after the Chief Minister of the state categorically said that those people guilty of this, unko mitti mein mila denge. This is what Yogi Adityanath had said. Mafia ko mitti mein mila denge. Bulldozers are rolling on the streets of Prayagraj where the aid of Atiq and his property, his illegal property, is getting razed. These are pictures, in fact, coming in. बुलडोजर अब आरोपियों के खिलाफ चलेगा, जैसा कि कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार और बाबा योगी ने कहा था कि अपराधियों को जब मिट्टी में मिला देंगे तो ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो धूमनगंज थाने में ये बुलडोजर आ चुके हैं। चकिया इलाके में ये अतीक के करीबी का मकान है जहां ये बुलडोजर चलने वाला है। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक इनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया था। अब ये मकानों पर ये कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। तो देख सकते हैं धूमनगंज इलाके में ये 2 बुलडोजर आ चुके हैं और यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। धूमनगंज इलाके में पुलिस भी आ गई है और फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर में ये बुलडोजर अतीक के करीबियों के ऊपर उसके मकान पर चलने वाला है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज। Abhishek Mishra is getting asked. Abhishek, no surprises there, given that this has been the kind of action that is usually taken against those disturbing law and order. I'm really not surprised. Give us a sense of what's happening right now as we speak. Well, certainly, and it is implication the way the UP government and Yogi Adityanath has given the clear indication that whosoever will be found involved, be it the mafia, be it someone who has acquired any such illegal possession, will be taken into consideration. But this particular case, Atiq Ahmad, is now being clearly targeted by the UP government. There had been several raids which were conducted a day before yesterday. This apartment where I am standing right now, the UP STF has raided at this place, and at the same time has also recovered 2 luxurious cars, some evidences, and at the same time the exercise is to get Asad, who is said to be the main person behind this whole murder. And at the same time, Atiq Ahmad is now someone towards whom the UP government is now taking every action. The Prayagraj incident and now bulldozer action is something which is very evident, taking a grip over him, and at the same time trying to make him unstable is what the government is trying to do. And Yogi Adityanath, in his address at the UP Assembly, has clearly given this indication. He said, "Mitti mein mila dunga," that means will be finished forever. And this is something, a beginning which is happening as far as Atiq Ahmad, his associates are concerned, and this recent incident of Umesh Pal murder. But not just it's about someone being, shot into the custody, police custody, but also challenging the law and order. And that is only reason that the UP government and the UP police, including STF, is now doing taking the rapid actions as far as this whole case is concerned. All right, yes. The Chief Minister really living up to his name, the moniker of Bulldozer Baba. But as far as the investigations are concerned, tell us a little more about the direction in which it is headed. This is a crime that has shocked the entire nation. In broad daylight, somebody is killed in such a fashion. Bombs are hurled to prevent people from helping the victim. This is what happened, played out in Prayagraj, Abhishek. Well, certainly, Sneha, and this has raised a lot of questions over the kind of, law and order situation here in Uttar Pradesh. And if somebody who is in the police custody has been given security, one of the key evidences, he was shot dead by someone, is something which is created not only the question on the integrity, but also the politically, it has also gained a lot of attention. A UP Assembly has been surrounded with all these allegations by the Samajwadi Party, but later on, Sadakat Khan's photo
flashing on social media with Akhilesh Yadav, then BJP getting it back to them, referring Samajwadi Party as a party of criminals and mafias, and now the action which has been taken by the UPSTF and the UP police to target all these places of Atiq Ahmad. And more importantly, it's about getting every minute detail as far as this whole incident is concerned. Asad, who is said to be the son of Atiq Ahmad, is someone who is very much into the radar of the UPSTF. The police is also conducting several, raids at several places. They've also getting to know about the background of all these people. And it has been said that just before the incident, this flat was particularly used as a location by the shooter and by his associates. So that is something which is also a key evidence for the UP police. And that's why these raids are being conducted. But as far as this whole, murder is concerned and the kind of action which was taken, the encounter which happened, and then the opposition and the government at the same time arguing over the responsibility, something which has get a lot of eye in Uttar Pradesh. But this is one thing is very clear as far as the action of the bulldozer policy is concerned. That is also going on, and the raids are being conducted. And now the major focus of the UPSTF is to get Asad behind the bar, so that it could be established that how the UP government has been able to get the accused behind the bar. But that is something which will still take time, because Asad is still absconding, and at the same time by the action of bulldozer and these raids, the UP police is trying to make Atiq Ahmad and his associate weaker, and that's the only reason such an exercise is being conducted. Yes. Thanking you for the moment, Abhishek Mishra, getting us that detailed report. Meanwhile, there has been a big twist in the probe into the daylight murder of Umesh Pal in Prayagraj. Uttar Pradesh police have now uncovered the role of gangster turned Neta Atiq Ahmad in this murder. Take a look at this detailed report. A key witness in a murder case is gunned down. The daylight murder of Umesh Pal outside his home in Prayagraj last week has shaken up Uttar Pradesh. The police investigation is pointing fingers to former SP MLA Atiq Ahmad. The gangster turned politician allegedly facilitated two conspirators to meet his brother Ashraf at the Bareilly jail to plan the murder. Police sources claim this was revealed and accused Sadaqat Khan, another key conspirator in the case. Sadaqat has allegedly confessed to meeting the shooters at the Muslim hostel in Prayagraj where he was living. इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुस्लिम हॉस्टल है, कमरा नंबर 36 यही है। इसी कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहा करता था और पूरी हत्या की साजिश इसी कमरे में की गई, ये आरोप यहाँ पर है। Meanwhile, photos of Sadaqat Khan alongside SP Chief Akhilesh Yadav has surfaced on social media, causing a political uproar. जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे तो अखिलेश जी को बड़ी तकलीफ हुई थी, आप सबने देखा होगा। बोलते हैं ये क्या किस प्रकार की भाषा है? अरे माफियाओं को, क्रिमिनल को कहां लेके जाएंगे हम लोग? उनको तो मिट्टी में मिलाना होता है ना, तो मिट्टी में तो मिला रहे हैं, तो आपत्ति किस बात की? मगर अखिलेश जी अब आप जवाब दीजिए, कितने क्रिमिनल्स को आपने संरक्षण दिया, आपकी पार्टी ने संरक्षण दिया? The Samajwadi Party has denied Sadaqat is their member. तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। The Samajwadi Party also posted a photo of Sadaqat Khan with a BJP MLA's husband, claiming the murder was a conspiracy by the Saffron Party to spark communal violence. The police on Monday shot down another accused, Arbaz, who had a bounty of 50,000 rupees. The encounter comes just days after the Uttar Pradesh CM vowed to wipe out mafia from the state. माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता है।
police are still on the hunt for the main shooters who killed Umesh Pal. Bureau Report, India Today. All right, we are staying with these pictures coming in from Prayagraj, where bulldozers are now getting rolled in. Essentially, this is the property. The government says it's illegal property of an aide of Atiq, essentially. This is the aide of Atiq, the key accused in the murder of Umesh Pal. Bulldozer justice for murderer Atiq's aide. Bulldozer raising the property of Atiq's aide. Illegal construction of Atiq's aide is going to be raised. These are pictures, in fact, coming in from Prayagraj. This comes at a time after Yogi Adityanath had said, Mafia ko mitti mein mila denge. Bulldozers roll on streets of Prayagraj once again. This after the Chief Minister promised the severest action against those found guilty in this brutal murder of Umesh Pal. Even as the probe is on, the aide of Atiq, the main accused in this case, the property is getting razed by bulldozers in Prayagraj. This is what the Chief Minister had said, spoken about, not uncommon for bulldozers to be razed in this fashion, in fact to raise buildings in this fashion. Often it's seen in the state of Uttar Pradesh. Bulldozers again being used to raise down illegal structures. This is the property of key accused Atiq's aide, is what we know. Pictures, in fact, coming in from Prayagraj, where gangster Atiq Ahmad has, in fact, his aide's property, illegal property, is getting razed down by bulldozers. This, remember, is gangster turned neta Atiq Ahmad, a key accused in the murder of Umesh Pal. Illegal construction of Atiq's aide is getting razed. These are pictures on the left side of your screens, with the police, in fact, asking the people to step away from there, even as this action is being taken. UP police, they're taking action against Atiq Ahmad's aide in this matter. Previously also, there were raids that were carried out at Mafia Atiq Ahmad's property, and now the aide of Atiq Ahmad, his property is getting razed. अंजाम देने की हामी भरते हैं, उसके बाद बरेली जेल में शूटर्स तय होते हैं, और बरेली जेल में शूटर्स के तय होने के बाद कहा जाए कि सदाकत के कमरे में हॉस्टल नंबर 36 में यहां पर प्लानिंग रची जाती है. पुलिस प्रशासन हटा रहा है, क्योंकि अब ये बुलडोजर जब शुरू होगा तो जाहिर है कि मलबा गिरेगा, और तो ये हटाया जा रहा है. पुलिस फोर्स भी तैनात है इस घर के ऊपर. जैसे ये कार्रवाई शुरू होगी तो भारी पुलिस फोर्स मंगाया गया है और ये कार्रवाई शुरू हो रही है. ये देखिए, ये कार्रवाई यहाँ पर बुलडोजर उस ठीक घर के ठीक सामने पहुंच चुका है. ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से अब ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है. और ये जो जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पनाह दी थी बीते कई महीनों से, और ये बुलडोजर का देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू, और ये पहले ही कार्रवाई, ये और ये गेट पर पहली कार्रवाई करते हुए ये गिरा दिया गया है. बुलडोजर आगे गिरा दिया गया, बुलडोजर ने गिराना शुरू कर दिया, अपने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, और ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है. ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. और ये पहला वार बुलडोजर के हत्या ने किया है उस गेट पर. जफर जो खालिद है, जिसका मकान बताया जा रहा है, जिसके मकान में शाइस्ता रुकी हुई थी, उसके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है. करीब 3 करोड़ की कीमत का ये मकान है. इसी मकान पर कहा जाए कि शाइस्ता रुकी हुई थी, और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स यहां पर पहुंचे थे, शाइस्ता से मिले थे, और मिलने के बाद वो फरार हो गए. ये पूरी तस्दीक हुई है, और इस तस्दीक के बाद ये कार्रवाई का अभियान शुरू हुई है. और ये
हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थोड़ा सा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। ये निर्माण है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, 3 करोड़ इसकी अनुमानित। जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। सर, अभी विपक्ष का कहना यह है कि महंगाई बढ़ाई जा रही है, 50 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो रही है। देखिए, महंगाई एक बढ़ी है, इससे हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़े, अगर महंगाई बढ़े तो ये सरकार की कोशिश है। हेलो, समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव के साथ आरोपियों की फोटो वायरल हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं, जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है? समाजवादी पार्टी के नेता के साथ नहीं, खाली आपके परिवार के साथ आती है। तो अब इसका तो वही जवाब देंगे, अखिलेश यादव दीजिएंगे, नहीं समाजवादी पार्टी देगी। अब तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को देना है कि आपके परिवार के साथ क्यों फोटो आ रही है। लेकिन उनका अखिलेश यादव से जब कल ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, किसी की फोटो किसी के साथ वायरल हो सकती है। मेरी खुद मुख्यमंत्री के साथ मैं एक दफे इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक में एक की फोटो आ सकती है, 2 की तो नहीं आएगी। इत्तेफाक में एक परिवार के व्यक्ति के साथ आ सकती है, मत 2 परिवार के व्यक्ति के साथ तो नहीं आ सकती। तो इसका जवाब अखिलेश जी को अब देना चाहिए। एक सवाल था, अभी जिस तरह से पूरा उमेश पाल हत्याकांड का मामला था, उसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है। All right, high drama there. The bulldozers are getting raised in. These are illegal properties of Sadakat, the aide of Atiq Ahmad. Completely, in fact, in line with what has been said by the Chief Minister in the Assembly also, he spoke about taking the harshest possible action against the mafia. He said mafia ko mitti mein mila denge. In the past as well, bulldozers have been rolled in when it comes to bringing the law and order situation in control and taking action against those who are behind disturbing law and order in several parts of Uttar Pradesh. This is usually the kind of action that is often taken by the Uttar Pradesh police under the leadership of Yogi Adityanath. In this case too, Sadakat Khan is actually the key conspirator, one of the key conspirators in the Umesh Pal murder case. He of course now is in judicial custody, but this is an illegal property that is getting razed down. In this case, Umesh Pal, remember, was actually a prime witness to the 2005 murder of Bahujan Samaj Party. Raju Pal shot dead outside his residence, remember, in Prayagraj last week. The UP government has said that they're going to take the strictest action possible. A controversy has also erupted after Sadakat Khan's pictures went viral with Akhilesh Yadav. This is Samajwadi Party boss Akhilesh Yadav. And now a bulldozer has been brought in to raise down the property of Sadakat. This is the aide of Atiq Ahmad. Abhishek Mishra getting asked the very latest. Abhishek, you're telling us about this earlier as well, that this really is not surprising given that we've seen similar action in the past as well against those who create law and order situation in the state. Well, certainly, Sneha, and this action is nothing new as far as Yogi government is concerned. They have been maintaining the fact from day one of the second innings of this government that quick and rapid action will be taken and the bulldozer will make its way towards these illegal properties of mafias
of these criminals and all these people who are responsible for such incidences. And this once again is an example by the Yogi Adityanath government of, trying to take the grip over Atiq Ahmad, his associates, on Sadaqat Khan and on other people as well who are responsible. But what is also very important is that not just by, making them weak as far as their properties are concerned, but also the raids which are being conducted, arrests which have been made. At the same time, UPSTF, which is taking a rapid action, is something which is, 1, 2, 3, 4-way attack on the accused. And at the same time, Atiq Ahmad, who has been very, talked about as far as, this assembly was concerned. In UP Assembly, Samajwadi Party, who the BJP said that is responsible for, making him his way to the parliament, making his way to the UP Assembly. But on the other hand, BJP is also talking about, taking charge on these mafias. So that is something which is getting a lot of attention here. And once again, Yogi Adityanath working on his own words of mitti mein mila dunga, that is something, will get all these criminals on the soil, on the land. And this is something is getting very evident through this exercise, through this bulldozer drive, which is currently underway in Prayagraj. It looks like that the government has prepared a plan and they are working on it. हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के जमाने में कहीं कुछ नहीं किया जा कहा जा सकता है। All right, so we have in fact these details emerging right now. Abhishek continues to be with us, explaining to us what's happening right now in Prayagraj. Abhishek, you of course were telling us about this is perfectly in line with what has been promised by the UP Chief Minister in terms of bringing the law and order situation under control. Well, certainly, and once again, as I said earlier also, that this is a very important development because the government has been very vocal about it. All the ministers of UP government, BSc and Yogi Adityanath, the deputy chief ministers, and yesterday we also heard how JPS Rathod, the another minister from the UP cabinet, has clearly said that if the criminals and all these people are quite optimistic of, getting saved in any way, they shouldn't worry because the vehicle can also get down. So that is something which is a very important statement, and this shows the priority of the government. This shows the way they are working on it, and they are targeting all these mafias and taking the charge over it. And this exercise which is currently underway in Prayagraj is again a picture which emerged. You can recall this is not the first time. Earlier also one of the ex-leader of Samajwadi Party's house was also demolished in such a way in Prayagraj during the riots which happened in Prayagraj and his involvement, and then the government took the action. And now it's another picture where you can see that how this residential property, this property of Sadaqat Khan, is now being got down by the UP police, and that they have taken all the charge. So this is something which again give us an indication of the way the UP government is going to go ahead in this whole drive. Politically also, this whole case has taken a lot of attention. But if I talk about the action on the ground, which is all visible here in Prayagraj, where the bulldozers have arrived, the demolition drive has begun, and they are now targeting to, crack the bone of the mafia and getting the charge over him. And at the same time, as I said, the raids which were conducted in Lucknow, in Prayagraj, in other places as well, is currently also a major focus of the UPSTF, and that is what something which is now is the priority of the UP police and the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh. Yes. And the high drama continues as we stay with these pictures of the law and order situation, in fact, in Prayagraj, where bulldozers now have been brought in and the property of Sadaqat are getting razed down. Also, Abhishek, get us up to speed with the investigations in this entire matter as political links also emerge. This has become a big political war between the BJP and the Samajwadi Party. Pictures of bulldozers being brought in. Sadaqat's illegal property is getting razed. Who is then Sadaqat? He is one of the key conspirators
in the Umesh Pal murder case is what we know. His property is getting bulldozed after the UP Chief Minister spoke about taking the strictest action possible against the mafia. Sadakat, remember, is the same man whose pictures have surfaced with Akhilesh Yadav also. Subrat Pathak, MP of the BJP from Kannauj in Uttar Pradesh, is also now joining us. इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है सदाकत के खिलाफ. ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. उस हिसाब से ये परफेक्टली इन लाइन विद द प्रॉमिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर है. सुब्रत पाठक. देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित का बयान है. और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यदि सरकारों का समय अपराधी बन जाता है और अपराधी बनकर वो इस प्रकार के लोगों को दबाने का, सताने का, डराने का और उसके बाद उनको हत्या तक कर देता है, तो फिर उसके लिए क्या बचता है. निश्चित रूप से सरकार ऐसी आती है जो आम जन की सरकार होती है, शोषित वंचितों की सरकार होती है, गरीब कमजोरों की सरकार होती है. उनकी रक्षा के लिए उसको इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी ही पड़ती है ताकि इन अपराधी माफियाओं के अंदर एक भय पैदा हो, आतंक पैदा हो, उनको कानून का डर सताने लगे जिस कानून से कभी वो खिला कर सकते. बिल्कुल. किस तरह का एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो कि पाए गए हैं इस केस में, जो अक्यूज्ड हैं? देखिए, अब जिन्होंने दिन दहाड़े आकर एक तरीके से वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला किया है कि उमेश पाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. उमेश पाल उत्तर प्रदेश की सरकार की सुरक्षा में था. उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे और उस समय उनके ऊपर हमला कर देना माने सीधे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर हमला कर देना. और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर कोई हमला करेगा, हमारी सरकार के ऊपर हमला करेगा तो सरकार के हाथ में चूड़ियां पहन लेगी. निश्चित रूप से सरकार को जो कुछ करना चाहिए ऐसे दुर्दांतों का अंत करने के लिए जो कोई भी कार्रवाई की आवश्यकता पड़े वो सरकार को करनी चाहिए. मैं सरकार का समर्थन करता हूँ. जी, इनफैक्ट ये पहले भी हुआ है इस तरह से जो देखा गया है, जो की अक्यूज्ड है इसमें आतिक अहमद के जो एड है सदाकत, उनके फोटोग्राफ भी पाए गए हैं अखिलेश यादव के साथ. इस पे कई सारे सवाल उठे हैं कि किस तरीके से इस तरह की माफिया जो गुंडा हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी ऑबनॉफ करते हैं. देखो, अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति ने ही माफियाओं को जन्म दिया है. न तो कैसे अतीक अहमद पैदा हो गए, कैसे मुख्तार अंसारी पैदा हो गए. ये और आप अगर इनके इतिहास उठाओगे तो इनके हर जिले में किसी न किसी गुंडे को इन्होंने पनपाया है, बल्कि हर गांव में किसी न किसी गुंडे का एक तरीके से सरपरस्ती ये समाजवादी पार्टी की रही है. इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ. और रही बात दूसरी कि अब जो जिस समय की जो आज की जो परिस्थितियां हैं, अब इनके आज इन लोगों को पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि भाई जब आज अपराधी, आतंकी ये सब समाप्त हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी. हो सकता है ये एक बड़ा उनको इसको लेकर डर रहा हो, लेकिन सरकार ने भी बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि जिस कारण से हमको उत्तर प्रदेश में दोबारा आने का मौका मिला है, हम उत्तर प्रदेश में जो भी कानून के राज को तोड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी. मैं पूछना चाहूंगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस समय ऐसे बुलडोजर्स क्यों चलने चाहिए. ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये एक मामला है, इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हो और कोर्ट के थ्रू जो है, न्यायालय के थ्रू जो है वो जस्टिस मिले. ऐसे में बुलडोजर्स का क्या चलाना जरूरी है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है. जी, बुलडोजर चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती थी. समाजवादी पार्टी ने गुंडों को आश्रय न दिया होता. आप बताइए कि 2005 में जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राजू पाल जो कि विधायक था, चुना हुआ विधायक था, जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक था, उसको दौड़ा कर इलाहाबाद की सड़कों के ऊपर मार दिया गया. क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई उस समय के ऊपर हुई? उस समय पर बसपा समाजवादी पार्टी का सांसद आतिक अहमद हुआ करता था. इसने इसके पारिवारिक जनों ने मिलकर उसको मारा था. अगर उस समय के ऊपर कार्रवाई होती तो आज शायद बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं आती. लेकिन उस समय पर उनको आश्रय दिया गया, उनको सांसद बना दिया गया. सरकार के मैं तो एक वीडियो कल देख रहा था और उसके साथ साथ मैंने बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी चल रहे थे. तो जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाएगा और वो उसके इतने हौसले उसके बुलंद हो जाएंगे और जो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेगा तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई ऐसी होगी. बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा, गाड़ी तो पलटानी पड़ेगी. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सुब्रत पाठक, द MP of the BJP from Kannauj, saying that this is action that had to be taken and
It wouldn't have been required had the previous governments led by the Samajwadi Party taken the action necessary against these gundas, against these mafias, is what is being said now by the BJP. Remember, we are talking about action against the aide, in fact, of Atiq Ahmad, who is in fact one of the conspirators in the Umesh Pal murder case. Now, questions are being raised about the manner in which photographs of the accused have surfaced with members of the Samajwadi Party, including SP boss Akhilesh Yadav. As far as the investigations are concerned, this entire incident, remember, was caught on camera. The shootout was caught on camera. Umesh Pal murdered in broad daylight. Bulldozers razing the property of Atiq's aide there. And we're getting you more details of the investigations in this entire matter. Pictures on the left side of your screen is from Prayagraj. These are live pictures, in fact, of the police trying to bring the law and order situation also under control. A lot of people have gathered in this particular area. This is the house of Atiq's aide in this case. The key. खड़ी है ना बगल में, सब ठीक खड़ी है, हम मौजूद करा रहे जो होगा बताएंगे। देखिए, अभी जो चिन्हित किया गया है खालिद जफर का ये मकान बताया गया है। इनका सीधे कनेक्शन पुलिस के जो सूत्रों के अनुसार है कि शूटर्स यहां पर आए थे, शूटर्स यहां पर शाइस्ता से मिले और उसके बाद वो यहां से फरार हो गए। तो लिहाजा इसका उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनके सरपरस्त के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई कहा जाए कि खालिद जफर हैं जिनका ये मकान बताया जा रहा है, जिसके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। सामान निकाला जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो हैं। और ये जो इलाके की अगर हम बात करें तो ये बहुत तंग गली में बसा हुआ मोहल्ला है। और ये जो गली है जहां पर आप सामने जो बुलडोजर आते हम दिखा रहे हैं, तो वो जो बुलडोजर है जो खड़ा हुआ है इस समय पर, ये बुलडोजर खड़े होने के बाद आप देखिए कि पूरी गली चौक हो गई है, एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। यानी बहुत छोटी गली में ये पूरा मकान बनाया गया है। यही वजह है कि एक ही बुलडोजर के जरिए इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन जो अभी नजर आ रहा है कि कुछ मजदूर भी अंदर ले जाए जा रहे हैं, मजदूरों को अंदर भेजा जा रहा है। शायद अब ये हाथ से तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा तंग गली का मोहल्ला है और इस मोहल्ले में दूसरों के घर क्षतिग्रस्त ना हो, दूसरों के घरों को नुकसान ना हो, इसका भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ध्यान रखना होगा। इसको एहतियात बरतते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो एक्सपर्ट हैं, जो मकान को गिराने के एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद ली जा रही है। और यही वजह है कि तंग मोहल्ले में की जा रही इस कार्रवाई को बहुत एहतियात से किया जा रहा है। जो बुलडोजर आ करके जिसने पहले आते ही मकान के जो मेन गेट है उसको गिराया, उसके बाद उसकी बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया, उसको अभी थोड़ी देर के लिए रुक गया है, या कहा जाए कि थम गया है, ताकि सामान बाहर निकाल लिया जाए। और सामान निकलने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। इसको बुलडोज कर दिया जाएगा, पूरे मकान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो अब वो मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो नजर आ रहा है यहां पर प्रयागराज में। उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं, Getting you all the details of the bulldozer being rolled in. This is in fact Atiq Ahmad's aide Khalid's house in Prayagraj, where there is bulldozer action against illegal property of the aide of the key accused in this case. The Chief Minister had spoken about taking the strictest action possible against the mafia, and that's exactly is what we are seeing right now in Prayagraj. Some big breaking news coming in. Bulldozers have been rolled in. This at the house of Khalid, who is the aide of Atiq Ahmad. Essentially, action being taken after UP Chief Minister Yogi Adityanath had said that they're going to do all things possible to ensure that law and order situation does not go out of hand. First of all, these pictures, in fact, also of the shootout that took place a few days ago. The Umesh Pal shootout is what we're referring to. The aide of Atiq Ahmad, one of the key conspirators in this entire case, Khalid, his house is getting razed in Prayagraj, and these are pictures, in fact, coming in. There are others also who have, in fact, been detained by the police. Also, action being taken against the close aide of Atiq Ahmad,
as far as the bulldozer action is concerned. Abhishek has more details on that story. Also, Abhishek, the number of people involved in this, many conspirators. The conspiracy to kill Umesh Pal planned in the jail in Bareilly. Talk to us a little more about the key conspirators involved in this murder, and what sort of action further from today can we expect? Well, certainly, Sneha, and this was not just a thing which was planned in a day or two. It was a very well-planned incident which was conducted, and at the same time, if I talk about as far as this Umesh Pal murder is concerned, the Bareilly jail is a key point where this whole conspiracy was made. It has been said that Atiq's brother Ashraf was also aware of this thing. He was also in coordination, and at the same time, it has also been said that after meeting Ashraf only, the name of the shooters, how this exercise will be done, everything was planned out, and that has been revealed by Sadaqat Khan himself during the investigation and inquiry done by the STF. Also, it is important that the Sadaqat has said that the meeting with the shooters was held in the hostel room. So this is a very clear, statement where we can certainly say that it was a well-planned activity, and just not targeting a government, a key witness. It was not on the priority, but also to get every evidence. Okay, be with us. Daya Shankar Singh, member of the BJP, also in fact minister in Yogi Adityanath's cabinet, is now joining us. शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। ये बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं माफिया के खिलाफ, जब योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, हमारी सरकार जो है माफियाओं के खिलाफ में सख्त है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है बिना भेदभाव के। कोई भी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था पर काम करती है। कोई भी अपराधी को किसी भी जाति मजहब विशेष हो, उसको किसी के लिए छूट नहीं है। सब इस तरह के कोई भी जो लिप्त पाया जाएगा तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये मामला अभी पुलिस के हाथों में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस तरह का एक्शन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये गिल्टी है कि नहीं है, जो की कंस्पिरेटर्स बोले जा रहे हैं इस पूरे केस में। देखिए, जब एविडेंस मिलता है अपराधियों को पकड़ने के लिए, ये इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अपराधी पर दबाव बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि ये इस तरह के जो लोग एक समाज में एक आतंक फैलाना चाहते हैं, समाज को दूषित करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ में जनमानस में विश्वसनीयता के लिए, लोगों में एक भरोसा के लिए इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। So you heard there from Daya Shankar Singh as a minister in Yogi Adityanath's cabinet. There he is saying that there is in fact enough and more to suggest that these are the people who are behind the murder of Umesh Pal.